अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं हूँ सीप कुरैशी और आप देख रहे हैं मैपट एजुकेशन। आज हम मॉडर्न पोइट्री के पेपर में जो शार्ट क्वेश्चंस पास्ट पेपर्स में आए हैं उनको डिस्कस करेंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। Define alliteration. Give an example. Alliteration is the repetition of consonant sounds at the beginning of words in a verse. किसी भी जो पोएम है उसके शुरू में जो रिपीटिशन ऑफ साउंड होती है उसको एलिटरेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, फ्रॉम फर्स्ट द फैटल लाइन्स ऑफ दीज टू वॉइस। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द चिमनी स्वीपर बाय विलियम ब्लेक? द सेंट्रल आइडिया ऑफ द चिमनी sweeper is to highlight the innocent desires of liberty from the sooty profession of a chimney sweepers as a kind as this kind of dangerous work is not suitable for small children. सेंट्रल आइडिया जो था वो इसमें एक चिमनी स्वीपर होता है जो एक छोटा बच्चा होता है और उसकी जो इनोसेंट डिज़ायर होती है कि वो उसको आज़ादी हो चला जाए और इस प्रोफेशन से उसके बारे में। व्हाट टाइप ऑफ मेमोरीज डज वर्ड्सवर्थ रिकॉल इन द प्रीलूड? Wordsworth recalls the memory of his childhood by spending most of the time in the lap of the nature in the prelude. ज़्यादातर जो वर्ड्सवर्थ ने उसने मेमोरीज अपनी रिकाइल की हैं चाइल्डहुड की, अपने बचपन की, जो वो नेचर के गोद में होता था और वहाँ पर अपना टाइम गुजारता था। What is the theme of the poem When You Are Old by Y.B. Yeats? The prominent theme of this poem is the temporal सिग्निफिकेंस ऑफ ब्यूटी। जो इसकी मेन थीम है या एम थीम है, जो नुमाया थीम है वो क्या है? टेम्पोरल सिग्निफिकेंस ऑफ ब्यूटी, जो खूबसूरती की आर्जीपन है। What type of impression do we gather about Philip Larkin's personality after reading his poem Mr. Bellini? Just like the dull and dreary life of Mr. Bellini, we get the impression that William Philip Larkin must have the same personality, but Larkin's life was marked with pain of cancer that eventually took his life. जो बिलीनी का हम डल करेक्टर देख के हम सोचते हैं कि जो फिलिप लार्किन है उसका भी किरदार ऐसा ही हुआ होगा आम जिंदगी में, लेकिन फिलिप लार्किन को कैंसर हो गया था और इसकी मौत भी इसी वजह से हुई थी। तो इसकी जो ज़िंदगी है वो दर्द से भरी हुई है। What does west wind symbolize? West wind symbolizes for the beginning of new order after the end of the previous life. It can also be interpreted as the symbol of change and revolution. जो वेस्ट विंड होती है ये प्रीवियस लाइफ से नई ज़िंदगी की जो शुरुआत होती है उसको सिंबलाइज करती है और इसको हम सिंबल ऑफ चेंज या रेवोल्यूशन इनकलाब की भी कह सकते हैं। Explain the given lines with reference to the poem and the poet. And the round ocean and the living air and the blue sky and in the mind of man a motion and spirit that appels. ये पॉइंट पोइम जो है वो टेंटन एबे पोइम है जो विलियम वर्ड्सवर्थ की है। Through the very lines, the poet gives a clear idea of the spirit of nature. The presence of monarchy of nature can be found everywhere, be it the round ocean, the sky, or even in the mind of the poet. ये जो पोएम है और इसकी इस लाइन से जो हमें ज़िंदगी जो पोएम्स की जो नेचर की खूबसूरती है वो हमें वजाहत होती है और इसकी खूबसूरती जो नेचर में हमें नज़र आती है वो हर जगह में मौजूद है और जो खूबसूरती है वो समुद्रों में और आसमान में और हालांकि यहाँ तक कि पोइट के दिमाग में भी है। एक्सप्लेन द गिवन लाइंस विद रेफरेंस टू द पोएम एंड द पोइट। माई हार्ट एचेस एंड a drowsy numbness pain my sense as though of hemlock I had drunk। ये जो पोएम है ये और टू द नाइटिंगेल है जो जॉन कीट्स की पोएम है। इसमें शेर कहता है these lines have been taken from the beginning of the poem। In these lines the poet shows his condition of the excess pain that has been inflicted upon him through the fever and fret of life। The pain is so intense that the poet is unable to feel it। ये जो शायर की जो पेन है जो जॉन कीट्स थे वो ट्यूबरकुलोसिस से भी मुब्तला थे और अपनी कंडीशन को वो इस इन अशार के ज़रिए से वाज़ेह करना चाहते हैं।
Define romantic age in your own words. Romantic age was a literary artistic movement of late 1700 that aimed at showcasing and finding escape in nature and illustrating personal emotion attached to it. रोमांटिक एज जो है वो एक लिटररी एज है जो एक मूवमेंट की शक्ल शुरू की कर गई थी 17वीं सदी में या 18वीं सदी से हम इसको कह सकते हैं। ये जो है नेचर के और इंसानों का जो नेचर के लिए लव है उसको शो करता है और इसके ज़रिए से जो वो दुनियावी जो हलचल है उससे दूर भागने की जो कोशिश करता है उसके बारे में। What is the major theme in Little Black Boy? There are two major themes of this poem by William Blake. The first one is the earthly equality that the boy perceives for the divine love, while the second gives importance to life and the love to claim a good spot in the life after life. इस पोएम में दो मेजर थीम्स हैं, एक जो है डिवाइन लव के बारे में और दूसरी जो है आफ्टर लाइफ के बारे में। What is the central of the idea of the poem? To the skylark, the main idea hidden in this poem is to relish the freedom like a skylark that flies and to enjoy the nature of द सॉन्ग ऑफ नेचर। स्काईलार्क एक परिंदा होता है और इस पोइम का जो बेसिक आइडिया है वो ये क्या है कि जो आज़ादी होती है इस परिंदे के वो कि हवा में उड़ता है और गाने गाता है। What kind of memory does Wordsworth reveal in Tintin Abbey? William Wordsworth revealed his memories of childhood in his long poem Tintin Abbey. He recalls playing in the lap of nature and visiting the abbeys with his sister. जो वर्ड्सवर्थ है अपने बचपन को याद करता है कि वो कैसे नेचर के करीब था जब उसने एबे विजिट किया था अपनी सिस्टर के साथ। Explain the following lines in your own words along with the name of the poet. A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increase. It will never pass into nothingness. ये पोएम जो है वो एंडीमोनियम है जॉन कीट्स की और इन लाइन में वो कहता है कि if a person dies that does not mean beautiful things associated him with shall wither away with the hands of time. ये ज़रूरी नहीं कि इंसान जब मर जाएगा तो उसकी जो यादें वो भी हमसे गायब हो जाएंगी टाइम के साथ, ऐसा ज़रूरी नहीं है। Explain the following lines in your own words along with the name and the poem and the poet. What are the song of spring? Where are they? Think not of them. You has the music too. ये और टू आटम की पोएम है और ये जो है जॉन कीट्स की पोएम है। These nine are used to pay a tribute to autumn. Keats admired the way autumn plays the music of its own. ये आटम जो खिज़ां के मौसम है उसको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए जॉन कीट्स ने लिखी है। What is the main idea of the poem The Divine Image? The divine image conveys its main idea of establishing a divine relationship between God and the man through four virtues that are mercy, pity, peace and love. जो डिवाइन इमेज है ये खुदा और बंदे के दरमियान में जो ताल्लुक है उसको चार वर्चूज़ जो हैं उनसे शो करता है। एक मर्सी जो रहमदिली है, पिटी है रहमदिली, पीस जो अमन है और लव जो इश्क है या प्यार है। What is the central idea of poem When You Are Old? When You Are Old is a poem by W.B. Yeats in which he underlines a bleak idea of aging. He suggests that as soon as we begin to age, our youthful beauty starts to fade away. इसमें जो है मेन थीम जो है वो एजिंग है यानी उम्र जो हमारी बुढ़ापा आता जा रहा है। जैसे जैसे हम बूढ़े होते जा रहे हैं हमारी खूबसूरती कम होती जा रही है और हम पर बुढ़ापा तारी होता जा रहा है। Write a note on Philip Larkin, the poem When You Are Old. Write a note on Philip Larkin poetry in your own words. Larkin poetry gave us a slight hint at the pessimism lurking in the 20th century. His poetry mostly centered around religion, isolation, social chaos, love and nature. जो उसके दिन फिलिप लार्किन के दौर में जो लोगों के अंदर पेसिमिज्म था यानी कि पेसिमिस्ट हो गए थे जो लोग और वो मज़हब से दूर हो गए थे, बेगाने हो गए थे, अफरा तफरी और इन चीज़ों के बारे में
फिलिप लार्किन की पोइट्री घूमती है. What is the main idea of the poem Church Going? Church Going is a poem by Philip Larkin in which he discusses the theme of tension between religion and spirituality as well as the relationship between humans and nature. चर्च गोइंग में जो फिलिप लार्कन है वो टेंशन को डिस्कस करता है जो मज़हब और रूहानियत में है और इसके साथ साथ इंसानों में और खुद फितरत में. What is the central idea of the poem Downton Abbey? The central idea in Wordsworth's Downton Abbey revolves around remembering Wordsworth's childhood memories and man association with nature. इसमें वो अपने बचपन को याद कर रहा होता है टिंटन एबे में. What kind of memories do Wordsworth, Wordsworth reveal in what kind of memories do Wordsworth reveal in the prelude? Wordsworth reveals his memories of his childhood and school time in prelude, and how did he grow in the lap of the nature? Explain the given lines with the name of the poem and the poet in your own words. But still will keep a bore quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. ये एंडोमिनियम पोएम से और जॉन कीट्स की पोएम है. In these lines, the poet suggests that beauty is like a shelter or a shadow of a tree, which helps us plunge into our world of dreams. इसमें जो है शायर हमें कहता है कि जो ब्यूटी ऑफ नेचर है वो एक शेडो की तरह है जो हमें अपने आगोश में ले लेती है और हम सो जाते हैं. Explain the following lines in your own word along with the name of the poem and the poet. What are the songs of spring? Where are they? Think not of them, though has the music too. ये भी जो है पहले हमने explain कर दिए. What is the negative capability? Negative capability is the ability to remove oneself from a piece of writing and to become like the nightingale of Keats as a whole. नेगेटिव कैपेबिलिटी जो होती है वो क्या होती है अपने आप को अलग रख के और कीट की तरह राइटिंग करने को कहते हैं. What is the central idea of the poem Wild Swans at Cool? The central idea of this poem by W.B. Yeats is how time progresses. The poet is saddened to realize how much has changed since he began counting swans 19 years ago. Write a note on Philip Larkin's life in your own words. Philip Larkin was born in 1922 and died in 1985. He was a well recognized poet both in his country and abroad, but he avoided public gathering in modern American poetry. What is the central idea of the poem Mr. Blenny? Mr. Blenny is a poem by Philip Larkin in which he opens up the shallowness of life and of loneliness of humans. Define realism. Realism is the depiction of reality of everyday life through the lifelike personage in लिटरेचर. रियलिज्म में जो है हकीकत पर मबनी पोइट्री या प्रोस लिखी जाती है. सिंबलिज्म इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग symbols in a literary work, be it poetry, novel, drama, or prose, while a symbol is literary device that stands for something else beyond its literal meaning. सिंबल में यानी इस्तारे इस्तेमाल किए जाते हैं किसी वर्ड्स के लिए या किसी मौजू के लिए. Explain the term experience used in the Black's poetry. According to Black, experience is contrary to innocence, but both are essential for soul to function. Experience is what makes us tackle with the challenges of life. जो एक्सपीरियंस जो है वो क्या है तजर्बा होता है और ये मासूमियत के कंट्ररी है यानी मुतरादिफ है और ये एक्सपीरियंस जो होता है सोल को फंक्शन करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है. एक्सपीरियंस की मदद से हम मुश्किल हालात को चैलेंज कर सकते हैं चैलेंजेस का सामना कर सकते हैं. Why did Wordsworth visit Downton Abbey? Wordsworth visited Downton Abbey on July 1798 due to social and political turmoil during French Revolution. Wordsworth fled from France to save his life. यानी उसने अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए वो टंटन अबे गया था. Why does Shelley call the west wind destroyer and preserver? Shelley calls the west wind both the destroyer and preserver in his ode
The wind is destroyed in a sense because it puts an end to the lives of different plants and small birds in a cold winter. It is a preserver in the form of gentle breeze of spring that brings a new life into the प्लांट्स फ्लावर्स एंड बर्ड्स जो वेस्ट विंड होती है वो प्रिजर्वर भी होती है और डिस्ट्रॉयर भी होती है डिस्ट्रॉयर इस सेंस में होती है कि वो छोटे जानवरों को और पौधों को नुकसान पहुंचाती है जब वो ठंडी हवाएं चलती हैं और प्रिजर्वर जब वो कूल ब्रीज बाहर के मौसम में चलती है तो दरख्त उससे उगते हैं और फूल खिलते हैं और परिंदे चहचहाते हैं explain the following heard melodies are sweet but those unheard are sweeter ये जॉन कीट्स की लाइन्स हैं जॉन कीट्स इनमें बताना चाहता है कि जो ब्यूटी होती है वो लिमिटेड नहीं है बल्कि कंक्रीट है जो हमारे इर्द गिर्द फैली हुई है इट कैन लिव इनसाइड अवर world of imagination just like the unheard music played by the pipers inscribed on the Grecian urn that can be heard through the imaginative ears of our यानी कि जो सुनने में नहीं आती आवाज़ें वो भी बड़ी खूबसूरत होती हैं जिनको सिर्फ देखा जा सकता है जैसे कि ग्रेशियस अर्न के ऊपर पाइप्स बजाता हुआ एक इंसान नज़र आ रहा था Why does T.S. Eliot call London unreal city? T.S. Eliot called the London as an unreal city because of the people living in this city who lack warmth and ability to connect with each other. लोगों की सर्दमोरी की वजह से वो इसको अनरियल सिटी कहता था और वो एक दूसरे से जो बिल्कुल कटे हुए थे इस वजह से हाउ डज लार्कन शो हिज रिस्पेक्ट टू द चर्च Philip Larkin shows his disrespect for the church by mounting the pulpit and mocking the ceremony of church. Define the spirituous Monday in the second coming by the W. Yeats. Spirituous Monday, according to Yeats, means a muse that bestows upon the poets and writers to write. He thinks that Spirituous Monday is a primary source for images and symbols. Explain those purples that were his eyes. The lines appears in T.S. Eliot's Westland. These lines hence Ariel's song in Shakespeare The Tempest, probably as a symbol to highlight the ruins after World War One. What was the significance of uneven lines? The word uneven lines in Larkin's poem has been used as a symbol for the people who had been signing up for the participation in the World War First. First is mysticism. Mysticism, a person's spiritual association with God or the Absolute One. In my humble opinion, mysticism is something that takes us from the concrete world to a spiritual realm where there are no monarchy of time. यानी खुदा और जो बंदे का ताल्लुक होता है उसको मिस्टिसिज्म कहा जाता है What do songs of innocence signify? The songs of innocence signify the innocent fears and the actions of a child, how he needs the experience to get into practical life when he grows old. Define romanticism. Romanticism was a literary movement in the 18th century that emphasized at the subjectivity, importance of nature and primacy of the individual. सब्जेक्टिविटी के ऊपर emphasize करता है इम्पोर्टेंस ऑफ नेचर पे करता है और जो इंडिविजुअल की प्रेमिसी होती है यानी उसके ऊपर क्या बड़ाई होती है Define pantheism. Pantheism is a doctrine of religion and a philosophy that is used by a large number of literary figures who believe that God is present everywhere in nature. They think that God and the nature are the same. Why did Wordsworth pay his first visit to Tantana Bay? नहीं भाग के गया था वहाँ से जंग की वजह से डिफाइन ओड इज अ lyrical poem that is addressed to a living being an inanimate object or an abstract thing for example ode to western ode to important immorality lyrical poem होती है जो किसी अनलिविंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म या ऑब्जेक्ट के बारे में होती है why does Keats call an Sylvian historian Keats called the urn a Sylvan historian because of the image printed on it. The image portrays a pagan festival in which people are surrounded by wooden trees because the word Sylvan means wooden. Explain those were the pearls that were his eyes.
These lines appear in T.S. Eliot's Wasteland. These lines hints at Ariel's song. What are the four divine qualities in the divine images? Mercy, pity, peace, and the love are the four divine qualities. Why did Wordsworth visit? Why does Wordsworth means by nature? Wordsworth conceived nature as a living being, as a source of joy, and as a great teacher. Wordsworth worshipped nature due to the very qualities that he gave to nature. What is the underlying message to the or to the West Wind? Message of both destruction and creation. Life is continuous progress that is marked by destructive as well as creative activity. After the destructive destruction of winter comes the creativity of the summer. Escapism is the desire of a romantic poet to flee from the harsh realities of life into the lap of nature. Prufrock Prufrock is the man of our modern time. He is the voice of disillusionment and loneliness who becomes bald at